Yes, hi everyone. So, in today's session, we'll be covering cockroach. Its morphology, we'll be covering morphology of cockroach. The scientific name of a cockroach is Periplaneta americana. Okay, so let's see. साइंटिफिक नेम क्या है कॉकरोच का? पेरिप्लानेटा अमेरिकानम. कॉमन नेम अमेरिकन कॉकरोच. अमेरिकाना इसलिए क्योंकि अमेरिका का इसलिए. लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन कॉकरोच? 34 to 53 mm. Okay, or else it can range from 1/4 inch to 3 inch, or it's basically brown in color. Wings extend beyond abdomen in males. We'll cover it in sexual dimorphism. So basically, body is divided into head, thoracic, and abdomen. Okay, body three parts में divided है cockroach की, head, thorax, and abdomen. तो एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? बाहर से देखने में कॉकरोच किस तरह से दिखता है? बॉडी सेगमेंटेड है. वो हमें कॉकरोच की बॉडी सेगमेंटेड इस तरह से नजर आती है. और इनके पास में एक हार्ड एक्सोस्केलेटन है विच इज मेड अप ऑफ काइटिन. सो दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. डू रिमेम्बर दिस थिंग. एंड दे आर कवर्ड विथ प्लेट्स. आपने अगर कॉकरोच को देखा होगा, वो प्लेट से कवर्ड होते हैं, हार्ड प्लेट्स. उनकी जो हार्ड प्लेट्स हैं उनको स्क्लेराइट कहा गया है. डॉर्सली जो प्लेट्स प्रेजेंट है उनको टर्गाइट्स कहते हैं. वेंट्रली जो प्लेट्स प्रेजेंट है स्टर्नाइट कहते हैं. एंड laterally also is present, that's known as pleura. Let me note it down here. Laterally, pleura. Okay, a large chitin plate will be present, that's known as protonum. We'll see in diagram here. Yeah, so this is a cockroach. Body is divided into head, thorax and abdomen. So you see cockroach की body covered है plate से. Dorsally by tergite, ventrally by sterite or sternum, and laterally by pleura. Do remember this one, important. And the joints, basically they have arthodial membrane which is providing them flexibility so that they can flexibly move each. देखो अगर आपको, if you cover yourself with some shield, so move नहीं कर पाओगे until unless there is certain flexibility. अगर flexibility होंगी तो you can bend and you can do the work. अगर ऐसी शील्ड है जो कि बेंड ही नहीं हो सकती तो you can't have the flexibility. अगर वो शील्ड में बीच में स्क्रूज बेसिकली फोल्डेबल है, आप flexibility शो कर सकते हो, you can bend and do your work. So that arthodial membrane is helping them for the flexibility. Understood? Moving further, so what's the part? Head segments क्या है? Head, thorax and abdomen. So हम पहले head cover करते हैं. हेड किस शेप का है एंड किस तरह की मूवमेंट होती है हेड में? तो हेड किस शेप का? ट्रायंगुलर हेड है. ओके, the shape is triangular, it's mobile due to flexible neck. So they have the flexible neck, and this neck is extension of prothorax. Basically three segments है: prothorax, mesothorax and metathorax. So what is a neck? It is a extension of prothorax. It is what? It is extension of prothorax. Okay, and it is formed by the fusion of 6 segments. Okay, 6 segments मिलके हेड बनाते हैं. तो हेड कितने सेगमेंट का है? एक ही सेगमेंट है, विच इज इन अडल्ट. सो जो निम्फ है, निम्फ स्टेज में हेड के 6 सेगमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूज होके एक सेगमेंट बना रहे हैं अडल्ट में. अंडरस्टूड? And in head we can see a pair of compound eyes. Okay, head capsule bear a pair of compound eye in which there will be ommatidia. We'll cover it later on. So antenna, head में से antenna आ रहे हैं,
आपको देख सकते हो इफ यू सी द कॉकरोच. सो एंटीना अराइजेस फ्रॉम द सॉकेट बिफोर आईज. द फंक्शन इज सेंसरी. Okay, so you see here antenna from the head region. Antennas are arising, and even we can find the compound eye. Okay, now moving further, and is formed by the fusion of six segments. Mouth parts. The mouth basic function क्या है mouth का? Biting and chewing type का mouth है. Okay, here biting and chewing type. What are the parts present? Labium, which is the upper lip. Mandible, uh, for cutting and grinding. Maxillae for handling food. Labium is lower lip, and hypopharynx is tongue-like structure. So see here, this is the mouth part. Okay, this is a head region of cockroach, part of head regions. So compound eye, ocelli, basically is a simple eye. Ocellus is a simple eye. Okay, then maxilla, mandible, labium, labium. Let's see first. So labium is one, and it is a upper lip. Okay, and labium is the lower lip. It is also one in one here. And hypopharynx, it is a tongue. It is also one. You see, mandibles are in pair, so there are two. And what is the function of mandible? Grinding and incision. Okay, crushing करना food को या उनको grind करना. काम किसका? ये mandible का. Then maxillae are there. They are also two in number, and you can see they are having this hair like structure, nothing but the papillae. सो अप्पर लिप है, मैंडिबल फॉर कटिंग ग्राइंडिंग, मैजिले फूड को पकड़ने के लिए, लेबियम लोअर लिप है, हाइपोफेरिंक्स टंग लाइक स्ट्रक्चर. that was all about head. Now let's see the thoracic part. So thorax तीन पार्ट में डिवाइडेड है. प्रोथोरैक्स which is neck जिसका एक्सटेंशन है, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स. ईच बेयर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स. मतलब प्रोथोरैक्स से भी एक लेग है, मेटाथोरैक्स से भी एक लेग है, और मीसो से भी. तीनों रीजन से एक एक लेग है. सो वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग. Okay, if this is a cockroach, from each region one leg is arising. Okay, each bear a pair of walking leg connected to head via neck, which is nothing but a prothoracic extension. So you see here, from prothorax one pair of leg, from mesothorax one pair of leg, and from metathorax one pair of legs. Okay, so three pairs of legs are arising from each pair of, sorry, from each division. So wings की बात करते हैं. दो टाइप्स के wings है. फोर wings, also known as stegmina, and hind wings. So जो फोर विंग है, it is arising from mesothorax. Second part से arise हो रहा है. It is opaque. Okay, you can't see through it. Then it's leathery and it's protective. So it is not used for flight. इसका काम क्या है? Protection. Not used for flight. ये कॉकरोच को उड़ने में मदद नहीं करता. ठीक है, और फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द हाइंड विंग्स. प्रोटेक्टिव है, सो इट्स प्रोटेक्ट हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करना इसका काम है. अंडरस्टूड. देन वी हैव द हाइंड विंग्स. दे आर राइजिंग फ्रॉम द मेटाथोरैसिक region. Okay, and they are transparent, membranous, and they're used for flight. Important. So this is the फंक्शन ऑफ विंग्स. फोर विंग को टेगमिना भी कहा गया है, जो कि मेसोथोरैसिक रीजन से अराइज हो रहा है, ऑल्सो नोन एज मेसोथोरैसिक विंग्स. टेगमिना अनदर नेम है. डार्क है, ओपेक है, लेदरी है. फंक्शन प्रोटेक्शन है, फ्लाइट के लिए यूज नहीं होता. किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. हाइंड विंग्स मेटाथोरैसिक रीजन से अराइज हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनियस है, और फ्लाइट के लिए यूज होते हैं, उड़ने के लिए. ओके, सो यू सी
This one is leathery, opaque dark, and the hind wing जो कि फ्लाइट में हेल्प करता है, एंड फोर विंग कवर्स द हाइंड विंग. ओके. Coming to the third part, abdomen. Head region done, thoracic region done, now abdomen. So abdomen के कितने segments है? 10 segments है in both male and female, and it is covered by a sclerite. And each sclerite में कौन सी membrane है? Flexible arthodial membrane. Do remember, the abdominal segment is going to contain reproductive and anal structures. ठीक है? Reproductive and anal structure. So abdomen 10 है in adult. In adult it is 10, but in nymph stage how many segments are present? 11. एक बढ़कर है. thoracic में कितने regions थे? प्रो, मीजो, मेटा, 3 है. Okay, 3 segments है. Both in both nymph and adult. Okay. abdomen 10 है adult में, 11 है nymph में. हेड 6 सेगमेंट से फ्यूज होके एक सेगमेंट बना अडल्ट में, इसका मतलब निम्फ में 6 है. ओके. सो लेट्स सी द abdominal part. So it's going to contain the anal structure and reproductive parts. So first let's see the female abdomen. So female abdomen में 7 sternum जो कि बोट शेप का होता है. What it will do? It will form the genital or brood pouch along with 8th and 9th sterna. 8th and 9th sterna को मिला के बेसिकली 7, 8, 9 तीनों मिलकर ब्रूट या जेनाइटल पॉच बना रहे हैं. और इसमें से जो 7th sternum है उसकी शेप बोट की तरह है, बोट शेप्ड है. सो व्हाट दिस ब्रूट एंड जेनाइटल पॉच इज कंटेनिंग? इट कंटेन फीमेल गोनोफोर, spermatical pore and collateral gland. Okay, so to remember, three things are there in brood or genital pouch, that is female gonopore, spermatical pore or collateral glands. Understood? Next, male abdomen. Male abdomen, it is having the genital pouch which is formed by the fusion of 9th and 10th terga dorsal boundary से. वेंट्रल साइड से 9th sternum. डॉर्सली क्या है? 9th एंड टर्गा फ्यूज हो रहे, वेंट्रली 9th sternum. सो ये सेगमेंट्स मिलकर जेनाइटल पॉच या चैम्बर बनाते हैं जिसमें एनस, जेनाइटल पोर, गोनोफाइसिस हमें देखने को मिलता है. एंड एनल स्टाइल इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, इट इज एब्सेंट इन फीमेल. So it's a sexual dimorphism we can observe in a cockroach. Okay, anal style also known as caudal style. Understood? So how, which segments are involving? 9th and 10th targa and 9th sternum. Do remember the segments. Okay. So now anal circi. Wait a minute. So in both sexes, 10 segment bear a pair of jointed filamentous cerci. Basically, anal cerci is present in both male and female. But when we talk about anal style or caudal style, it is seen only in case of male. Okay, and one more difference is there between male and female about wings. Okay, what is that? In which case the wings are longer, in male or female? Male. Okay, so the function of anal cerci is sensory, to detect the vibration which they are receiving. So basically, head, how many segments in adult? Only one. In nymph, 6. Whereas thorax is 3 in both the cases, adult में भी nymph में भी. abdomen के 10 segments से adult में, 11 segments से nymph stage में. head क्या contain करता है? mouth part, antenna. Okay, under mouth part there is labium, upper lip, labium, lower lip, mandible, maxilla and hypopharynx. Okay, special structure in head we can find the compound eye for vision. Even ocelli are present which is simple eye. thorax में legs and wings है. legs तीनों region से आ रहे हैं,
each pair from meso, meta, prothoracic, mesothoracic, and metathoracic. Wings are from only two regions, meso and meta, hind wings and forelimbs. Abdomen के 10 segments है जो कि reproductive organs और circi present है. Okay, so yeah, mandible and maxillae are two in pair. Mandible for crushing and grinding, maxillae to catch the food. Okay, and because of the sensory structure, the papillae which are present here. Okay, this is about the frog. Okay, you can see it. So basic difference क्या है मेल एंड फीमेल में? एनल स्टाइल कॉर्डल स्टाइल का है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम इट द विंग्स ऑफ अ मेल इज longer compared to the female. It is also one of the differentiation we can observe. Okay, and they don't, basically many species of cockroaches are wild and they are not of any economical importance. You see, food को spoil करना, they'll do mostly this sort of thing. Okay, this is about the cockroach. In the next session we'll be covering the anatomy of cockroach. We'll be discussing about all the systems. So if you have any doubt, students, you can ask me in the comment section. And do like to the video, do subscribe to the channel, and do share among your friends. Okay, bye bye.